Hello everybody, so good to be back. Today I'm very excited. So today this video is a little interesting because today in this video I'm accepting all the mistakes I have made over the period of time, like the things which I've not done right for my makeup, regarding my skincare, regarding my take care of my hands or nails. So the lot of things which we do it wrong and we learn it on our way, or we learn it out of experience. So today I'm going to tell you about just 5 things. There are many more, so there's another ones which maybe I'll come in another video. So people who are seeing me for the first time, my name is Surbhi Kalia. I make videos about beauty, fashion, grooming. Do check out my videos. So today I've created this vintage look. I'm also wearing my fake eyelashes. These fake eyelashes are from Jimmy Woo, so quite cheap but a good effect. And this eye look I have created with this new Nykaa Daydreaming palette. They have amazing palettes. The color is great, the color combination is also great, pigmentation is nice. So, and all the retails for around 599 rupees, so you can give it a try. And I'm also going to create more looks with this eyeshadow in a separate video, so let's do it the next time. I'll tell you about the grooming and quickly, and then we'll come to the skin part. So very big mistake which I used to do earlier is that applying lipsticks without lip balm. So applying lip balm is very important. Nobody wants to it's never a good thing to apply lipstick on your chappy lips because the crack shows and it doesn't look nice and elegant, and it gets chips off very fast. So applying a lip balm is important. There's also a technique how you apply a lip balm. Just apply it and then massage it the way I did it, or you can wait for 1 or 2 minutes and then take a absorbent wipe or tissue paper and just kind of dab it to take off an excess, and the rest of it just massage it so that your lips get moisturized and it is soft and supple. And of course there's not much of creaminess, so you can easily apply your lipstick. After that, always use a lip liner. For the red lipstick, I have shown you another tutorial. You can put a lip liner after you have applied your lipstick or before you have applied your lipstick, because it always makes it helps your red lipstick not to bleed. And after that, it's up to you how you want to apply your lipstick, with a brush, or there is another tip. If it's a dark lipstick and if it's a matte lipstick, apply it with your fingers. And if you don't want your fingers to get dirty, then use a Q-tip or a brush, and then just very smoothly just move it along, because that's the right way, because then the excess doesn't come, and whatever excess it's on the tea, just put a finger and take it out, the excess will come out. This is the best way to apply your red lipstick. So I hope you never repeat this mistake. For the second one, I'm going to talk about my eyebrows. So eyebrows, again, I never used to do my eyebrows. I always used to think getting eyebrows done from the salon is enough, but now I've realized filling up your eyebrows makes lots of changes. So whatever I'm doing, that's minimum I do. And lockdown mein eyebrow pencils had become my best friend, because even if you have little bit of excess hair, these with the help of your brow pencil, आप उसको merge करके एक neat look दे देते हैं. So eyebrow pencils are must, never forget to use them. After that, it's the nail paint. Okay, so what I'm going to tell about nail paint is that it's not important that you put your nail paint very often. Please leave your nails without nail paints for a few days. That is very important. One more other thing is that स्क्रब. सो फेस स्क्रब्स एक्चुअली काफ़ी ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कुछ साल पहले मुझे सुनने में आए थे. जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग क्या करते हैं, हाउ कम दे स्किन लुक सो नाइस एंड हेल्दी एंड ग्लोइंग. इवन यू सी पीपल ऑन टी वी एंड यू से यार इनकी स्किन कैसे ग्लो करती है. सो आप किसी कॉस्मेटिक शॉप पे जाते थे, आई रिमेंबर वो एक बहुत ही हार्ड हिटिंग स्क्रब्स आते थे. एप्रिकॉट स्क्रब मिलते थे मार्केट में, से इसको स्क्रब करो तो डेड स्किन निकल जाती है, ग्लो आता है. सो मैंने वो यूज़ किए, एंड द वर्स्ट पार्ट वाज वो एक बार ख़रीदा तो वो रेगुलरली यूज़ किया तो और स्किन एब्रेजन्स हो गए, स्किन में और प्रॉब्लम्स आ गई, पोर्स ओपन हो गए. सो using scrub a lot is not great, and not using a scrub is also not good. So how do you go about using a scrub? First of all, आपको एक ऐसा scrub चूज़ करना है जो एक्चुअली बहुत ही एब्रेसिव ना हो, लाइक बहुत ही रफ ना हो आपके फेस के लिए. Just my suggestion that I am using MCaffeine coffee scrub. You can use whatever scrub you are using. You can invest in something more costlier than this, up to you, but don't, like, my skin is sensitive. I use it too hard, I can feel the heat coming out, I can see it going red, or I'll feel whenever I put the product after it, I feel that there's some irritation going on. So you have to choose things for yourself, do a little bit of patch test and then go about using it. So जो भी प्रोडक्ट आप स्क्रब यूज़ करें,
पहली बात तो स्क्रब यूज़ ज़रूर करें, आई विल नॉट से डोंट यूज़ स्क्रब, बट लाइक यू नो इन पर्टिकुलर इन दिस केस दे सजेस्ट यू डोंट यूज़ इट मोर देन ट्वाइस अ वीक. सो ट्वाइस अ वीक ये सजेस्ट करते हैं. लाइक यू नो आजकल हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, मेकअप कम लगा रहे हैं, एक्सपोजर कम है, सो आप एक्चुअली वंस अ वीक भी कर सकते हैं. सो you can go up to 2 times if you need it, otherwise just go up to 1 time. Don't go like scrubbing. It says spend around 2 minutes doing it, so continuously do it for 2 minutes and the dead skin and whatever dirt is stuck, everything will come out. And यूज़ इट रेगुलरली. लाइक मैंने से कि ओके वंस अ वीक करना है, सो एवरी वीक करिए. ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ शादी में जाने से पहले कर लिया, आज पार्टी में जाना है तो स्क्रब के लिए. डोंट डू इट, बिकॉज कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होगी. यू हैव टू यूज़ इट फॉर लॉन्ग टाइम टू शो द रिजल्ट्स. ओके, अदर थिंग इज सिरम, फेस सिरम्स. ओके, मैंने से फेस सिरम एक्चुअली काफ़ी काम करते हैं हमारी. फेस सिरम एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी है, सो फेस सिरम यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ उसमें एक प्रॉब्लम है कि काफ़ी तरह के सिरम है मार्केट में. विटामिन सी सिरम है, ग्रीन टी सिरम है, यू नो डिफरेंट पेप्टाइड्स हैं. एक सिरम है जिसको हम एसिड बेस्ड सिरम कहते हैं, जो एसिड बेस्ड टोनर्स के कॉम्बिनेशन में आते हैं. सो दिस इज़ वन प्रोडक्ट आई एम यूजिंग, डॉट की स्किन केयर हाइड्रो पील ग्लो पोशन. इट हैज़ 10% AHA एंड 2% BHA एक्सफोलिएटिंग सिरम. सो व्हेन इट सेज एक्सफोलिएटिंग, तो इसमें एक एसिड बेस्ड, जो AHA एंड BHA जो मैंने बोला वो एक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स है. सो बेसिकली एक माइल्ड एसिड है जो हम अपनी स्किन पे लगा के we either we kind of massage it or we wipe it with a, like once you apply it just wipe it with a tissue. So ये exfoliate करता है डेड स्किन को, तो आपके यू नो नए सेल्स बनते हैं, डेड स्किन निकल जाती है, काफ़ी ग्लो आता है आपके फेस पे, एक्ने प्रॉब्लम्स को चली जाती है, पिगमेंटेशन में वर्क करता है. बट यू हैव टू रिमेंबर इट दैट यू कांट यूज़ इट रेगुलरली. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी एसिड बेस्ड सिरम और टोनर्स आप डे टाइम में नहीं लगा सकते. लगाएं तो ज़रूर सनस्क्रीन लगाएं, सन एक्सपोजर आपका मिनिमम रखें. Otherwise, best is that use it during night time once you are doing your night routine. Just apply it then and apply a good night cream and then just go off to bed. That's the best way to use it so it doesn't harm your skin. If you're using it during daytime, use it with a sunscreen. Like even sunscreen has certain rules to follow, that when you apply a sunscreen, wait for 20 minutes to step out in the sun. So that is one suggestion. Other than that, कोई भी एसिड टोनर्स आप लॉन्ग टाइम नहीं यूज़ कर सकते. लाइक आई लव दिस प्रोडक्ट बट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई यूज़ डे इन एंड आउट और यू नो आई यूज़ इट फॉर मंथ्स. नो, you know, I use it for a week, then I don't use it for 2 weeks, again use it for a week, and again you don't use it for 2 weeks. I know ये you know, because maybe I am you know into the skin care, I have an interest, so मैं ज़्यादा ध्यान रख पाती हूँ. Otherwise you know, use it maybe for the ladies. I can suggest you whenever I get my acne time, like when I have my you know cycle going on or my periods going on, तो मेरे को हमेशा you know I get some kind of acne around my mouth or nose. So that's the time I start using it, because first of all ये acne को आने नहीं देता, जो आता है उसको you know it removes the acne, helps in mean getting rid of the acne. उसके बाद marks नहीं रह जाते, तो ये acne के time में it really works, like in those days it really works. So my idea is I definitely use it during that week. अदरवाइज़ मैं इसको नहीं भी यूज़ करती हूँ. अदरवाइज़ मैं एक रेगुलर ग्रीन टी सिरम यूज़ करती हूँ. ये एनकैफीन का ग्रीन टी सिरम है जिसका रिव्यू मैं बता चुकी हूँ. इट्स अ ग्रेट सिरम. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टोनर एंड अ सिरम. इट हैज़ अ ग्रीन टी एंड इट हैज़ अदर you know other anti-aging properties which helps, and it has good results, very light on your skin. So ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, एंड ये प्रोडक्ट आप एक्चुअली डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई एसिड बेस नहीं है. सो एनीथिंग विच हैज़ एक्सफोलिएटिंग फैक्टर, विच हैज़ एसिड, don't use it too often. So of course when you are reviewing so many products, I'm personally using it on myself and then I'm giving you a review. So मुझसे काफ़ी गलती हुई और मैंने इसका रियलाइज़ किया कि नहीं ये गलत है. So these are the things which I shared with you. These are very important, nothing to be ignored, because I know first of all, and especially the skin care stuff, you know, there's a skin care stuff where I personally feel ये चीज़ें definitely हमें पता होनी चाहिए कि हमें toner and exfoliators and exfoliating serums एंड स्क्रबर्स किस तरीके से यूज़ करने हैं. एंड फेस वॉश का भी एक गोल्डन रूल है विच आई हैव शेयर्ड बिफोर ऑल्सो, दैट यू वेन एवर यू वॉश योर फेस, स्पेशली वंस यू हैव डन योर मेकअप और जस्ट बिफोर स्लीपिंग, व्हेन यू आर डन विद योर होल डेज वर्क, डू स्पेंड
1 minute in washing your face to get that whole thing out. You know, the soap and water and skin has to work for that much amount of money to get all the makeup and dirt and pollution, everything has to come out. So please do follow these tricks. Let me know what's your review, and do let me know how did you like my. And if you like this video, don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to like, share and comment. Do let me know is anything you felt you were doing wrong and you personally want to share with me, because you know this would be something I'm still doing wrong. Okay guys, see you again. Bye bye.